welcome back to another vlog. Today I'm generally very excited because we're going to Universal Studios and it's really good. Like, it has a lot of rides and my favorite ride is the Mummy ride. I think I'm gonna, and the Transformers ride. So I think I'm gonna go on that like 5 times. That's the plan. And इतनी ज़्यादा like probably vlog नहीं कर पाएंगे because you can't really use your phone a lot when you go on rides, but we'll try our best. Yesterday Azhar was wearing this shirt and I just wore it today. Azhar chose my outfit. Why would you choose a shirt you wore yesterday? Because I wanted you to wear something light so that when you go on the rides it doesn't get stuck, so that's why. I was gonna wear a dress originally. Honestly, like I've worn like पहले मुझे भी लगता था dresses नहीं पहन सकते rides पे because that's very impractical. लेकिन मैंने कुछ time पहले we went to Gold Coast and then I happened to wear a dress and get onto a few rides and it was fine. So I was like, yeah, I can manage with a dress as well. Today I scratched my eye really bad right here. So if you can see, like this one's a bit swelly and then the other one is not. और यहाँ पे आके मैं इतनी काली हो गई हूँ. This is all foundation. My foundation just became 7 shades lighter to me and I have literally like covered my entire face in sunscreen, but that's what happens on a vacation. I feel like we need to stop obsessing over skin color because Australia, maybe like when we are going to the beach and everything, we do get like tan. Azhar has never been to Universal Studios before. Azhar, did you check out some rides or anything? I did check out some rides, but then I didn't check out much because I wanted it to be a surprise. So that I look at the rides, I'll be like, oh, this is gonna be scary and it's gonna be fun. There are only a few scary rides. Yeah, I hope so. I don't like a lot of spinning. I like simple, I smooth like roller coaster. I like fast. everything. I like everything. मुझे आप ऊपर से लेके नीचे फेंक दे, spinny rides, circles, 270 degrees, 360 degrees, high speed, low speed, everything. How was your ride experience? It was good. We went to Transformers first. Pretty amazing. There were 2 falls which were really good, which felt real. And now we are at kids ride. So we're on a kiddie ride now at Transformers. Let's see how it is. I like how my makeup is really glowy today. It's all the sunscreen. Centrifugal acceleration insufficient. Participants increase vertical axis rotation. अब हम जो है ना वो 2 स्केरी रोलर कोस्टर्स पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे हमें फ़ोन अपना लॉकर में रखना है. सो वी कांट शो यू गाइस, बट आई एम सो एक्साइटेड. As you can see from my hair, we did 2 roller coaster rides. The blue one at Transformers I recommend. It's really good, and the Transformers 3D ride is also very good. Abhi hum that's a lady boy, man. अभी हम मम्मी वर्ल्ड में हैं.
picture. ये देखें, created it like ancient Egypt. Look at this, guys. Indian food at Universal Studios. So there is definitely lack of halal food here. मतलब halal food options के बारे में सोच रहे हैं. आपको fruits वगैरह मिल जाएंगे, ice creams मिल जाएंगी, some watermelon juice and stuff like that. But खाना नहीं मिल रहा और ऐसा मुझे शदीद भूख लग रही है. And समोसे मिल रहे थे वेजिटेबल, वही इंडियन रेस्टोरेंट पे. मैंने अज़र को कहा समोसे ले लेते हैं. एंड देन हलाल मीट ऑप्शन है नहीं, तो आपको वेजिटेरियन खाना है, फिश खाना है, या फिर ड्रिंक्स वगैरह लेनी है और फूड लेना है. Okay, correction. Basically, that mummy place was halal. So Azhar took like some Indian food और मेरे लिए समोसे. यहाँ पे बेसिकली मैं आपको एंशंट इजिप्ट का एरिया दिखा रही थी एंड हाउ इट लुक्स. द ममी राइड वाज इन देयर एंड देन वी मेड आवर वे टुवर्ड्स मैजिक किंगडम व्हिच इज़ ऑब्वियसली मैजिकल एंड अमेजिंग. तो ये मैजिक किंगडम का कासल था. आई एम सॉरी अबाउट द लाइटिंग इन दिस व्लॉग. एक्चुअली इट वाज रेनिंग एंड देन वी वर स्वेटी एंड लाइक आई डोंट इवन नो. So yeah, sorry about the lighting. You can't control the light quite a lot in an outdoor environment. This was just a show that we saw stopped on the way. We drown and we float, we burn, we survive. Now I've got oil and I've got fire. And 1,000 men was willing to kill. We're not your friends. And you will never find a way to dry land. I won't let you. Oh, well. Who was the tide drag then? वैसे ज़्यादा कोई ख़ास नहीं था, बकवास सा ही ये शो था. बट सम ऑफ द शोज वर रियली गुड. वी स्टॉप्ड एंड वी आल्सो सॉ कुकी मॉन्स्टर शो एंड मिनियन शो. सो दोज वर नाइस. बट ये तो एमी था. वी जस्ट डिडंट वांट देम टू फील बैड. दे वर डूइंग द होल शो, सो वी वर लाइक चलो खड़े होके सुन लेते हैं. पता नहीं मारना धारना कुछ ऐसे चल रहा था. Leave us alone. Come on, you. Yes! Right here! Come on, Marina! And sorry about the noise. This was just us on Puss in Boots roller coaster, and then we went to Magic Kingdom. And honestly, Magic Kingdom के अंदर कुछ शोज़ बहुत अच्छे थे, लेकिन मेरा सबसे फेवरेट जो था ना वो पूरा उसमें मिनियन वर्ल्ड था. आई रियली एंजॉयड मिनियन वर्ल्ड. तो ये मिनियन वर्ल्ड है, उसके अंदर की शॉप है. आई जस्ट वांटेड टू शो यू ऑल दीज क्यूट मिनियंस एंड लाइक द स्टफ फ्रॉम द मूवी दैट यू कैन गेट. ऑनेस्टली मुझे मिनियंस का इतना ऑब्सेशन होता था ना. लुक एट दिस, द फ्लफी, इट्स सो फ्लफी, आई एम गोना डाई यूनिकॉर्न, एंड दैट्स जस्ट मी. And then I was just looking at all the things that you could buy. I really wanted to get myself a minion, but I stopped myself from getting one. और ये crazy minion, I don't know if you guys have seen the movie, but I used to love like the wild evil minions as well. And then this was the Sesame Street show, and this one was really nice. I actually enjoyed it because I really like Cookie Monster, and I also like that vampire guy. I've forgotten his name. जो थर्ड है पिंक वाली, उसका नाम भी मुझे नहीं पता. बट दिस इज़ एक्चुअली अ फन शो टू वॉच. Then we head off to Harry Potter World, जहाँ पे आपको ये वॉन्ड दी है. Harry Potter World is not in Universal Studios, it is actually outside Universal Studios.
बट दे गिव यू दिस मैजिकल वॉन्ड एंड देन लाइक इस पूरे वर्ल्ड में ये लाइट्स के ऊपर जो है ना वो मैसेजेस लिखे हुए थे. आई एम नॉट अ फैन ऑफ हैरी पॉटर. आई नेवर इवन रेड द बुक्स और द मूवीज़ और एनीथिंग, सो आई डोंट हैव वेरी गुड नॉलेज अबाउट दिस होल थिंग. बट इन्होंने एक वर्चुअली स्टिमुलेटेड एक जगह बनाई हुई थी जहाँ पर यू कुड जस्ट यू नो लाइक control everything with the wand and room would light up and different areas जो है ना वो magical areas जो आपके wand से control हो सकते थे. Basically that's what they're telling you, and they're showing you how to use the wand and how to take pictures and stuff. So obviously मैं और अज़हर ही थे और हम बहुत थक गए थे, इसलिए हमने इतना कोई फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के अंदर एफर्ट नहीं डाला. बट ऑफ कोर्स वील शो यू अराउंड हैरी पॉटर वर्ल्ड. सो ये एक रूम था, मुझे रेफरेंसेस नहीं पता फ्रॉम द मूवी, बट लाइक इट वाज लाइक विज़ार्ड ऑफ ऑज की तरह ना, वो साइक्लोन आया हुआ था बाहर. एंड देन दीज आर ऑल डिफरेंट रूम्स एंड इंस्टॉलेशंस फॉर यू गाइस टू सी. So you could literally use your wand and then touch it wherever you feel like वो magical orbs hidden है. So I was just touching here and there and trying. This room was pretty cool, but again I don't know what each room symbolizes. I just know कि rooms हैं और अच्छे हैं. That's it. So each book or each thing had a room, and ये जैसा अब ये wand मैंने इस तरफ की थी वो लाइट अप हो रहा था. इसी तरीके से जो भी आप करते थे डिफरेंट चीज़ें हो रही थी ना आपके अराउंड. And some of them were actually very cool. Like ये देखिए wand से area light up हो रहा है. That was actually very cool. There was one fireworks one that you will see shortly. That was really cool. So अच्छा interactive experience है. Specifically if you're a kid or a kid at heart and you like Harry Potter, you would actually like it. I would say take your kids if they like Harry Potter. I'm not a fan, but those who are would have actually enjoyed it quite a lot. So काफ़ी cool था. महंगा भी था बट अच्छा भी था. Okay, so we got done with Universal Studios. Our halat kharab hai because after we got done, we did go to Harry Potter World that we showed you, and now we're at the Hawker Street that you see like on vlogs and all. So we're going to go eat something. Hopefully we'll find some halal options. I don't know what else is doing. So I think we were actually at a wrong Hawker Street. I don't know, because my uncle was telling me everything at Hawker Street is halal, but this one didn't have a lot of halal options, and I don't know, we couldn't find what we liked. So then we decided कि चलो यहाँ पे खाना खाने से बेहतर है कि we just roam around and see whatever we have here and then do something else. पैरों में बहुत दर्द हो रहा था, तो इसके बाद we went to get a massage.
ये पाकिस्तान दम बिरयानी थी, आई वाज जस्ट शोइंग यू गाइस. एंड देन यहाँ से हम थोड़ा सा क्रॉस करके वी जस्ट वेंट फॉर अ मसाज. आई एम सो सॉरी अबाउट द स्क्रीन एंड आई डोंट नो. आई गॉट अ मैंगो ड्रिंक. ओ या, आई गॉट अ मैंगो ड्रिंक दैट आई वाज ट्राइंग टू शो यू गाइस. और यहाँ पे मून केक फेस्टिवल भी चल रहा था. एंड दिस वाज चाइना टाउन स्ट्रीट बेसिकली, जहाँ पे हम फिर दोबारा हलाल फूड ढूंढ रहे थे. लेकिन मतलब थाई फूड या कुछ सिंगापोरियन इस तरह में ना हमें ऐसा हलाल कुछ खाना मिला नहीं. सो देन वी डिसाइडेड टू सिट एट दिस प्लेस विच वाज हलाल. एंड it had like everything, dosas, Chinese, everything, Thai, everything. So I decided to have a dosa, and Azhar had a, I don't know, Azhar had chili chicken. And that's how we ended the night. And then next morning we moved towards the airport. I hope you guys enjoyed this one. If you did, give it a thumbs up. Take care. Bye.